welcome back to the channel. In this tutorial we are going to design and explore a complete 4-cylinder engine assembly with detailed dimensions. This tutorial is perfect for beginners and engineering students who want to improve their CAD skills and understand real mechanical system. So let's get started from sketch to the assembly. स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा डिज़ाइन 4 सिलेंडर इंजन। अगर आप ये बॉटम में देखें तो ये हमारे पास इसका 3D व्यू क्रिएट हुआ हुआ है। तो इस तरह का आज हम डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ़ पार्ट्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले पिस्टन है, एंड नंबर सेकंड में हमारे पास पिस्टन रिंग है, एंड हमारे पास थर्ड पे ये क्रैंक शाफ्ट है, एंड फोर्थ में हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, फिफ्थ में हमारे पास कनेक्टिंग रॉड कैप, एंड सिक्स में पिस्टन पिन आ जाएगी हमारे पास। तो हम वन बाय वन इनके पार्ट्स क्रिएट करेंगे असेंबली के, एंड देन एट द एंड हम इस पार्ट्स को असेंबल कर देंगे। सो फर्स्ट वन है पिस्टन। अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि हमारे पास जो आउटर डायमीटर है सर्कल का वो हमारे पास 85 है, एंड जो टोटल लेंथ है हमारे पास इस सिलेंडर पिस्टन की जो वो हमारे पास 90 मिलीमीटर, एंड एट द टॉप हमारे पास पिस्टन में एक डोम क्रिएट हुआ है जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 5 मिलीमीटर है, एंड हमारे पास यहाँ पे 3 पिस्टन रिंग क्रिएट हुए हैं। इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास इस प्लेस का जहाँ पे पिस्टन रिंग आएगा वो हमारे पास 4.3 है। अगर आप इस सेक्शन व्यू में देखें तो 4.3 गिवन है। फिर हमारे पास जो दो पिस्टन रिंग के दरमियान की जो हमारे पास प्लेस है वो हमारे पास 7.3 है, एंड देन हमारे पास फिर एक यहाँ पे होल क्रिएट होगा। जो डायमीटर है वो हमारे पास 33.8 है, एंड देन हमारे पास ये कुछ एरिया कट भी होगा, और इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास है जी 50 मिलीमीटर टोटल लेंथ, एंड 12 मिलीमीटर इसकी हाइट होगी, एंड एजेस पे हमारे पास R10 का फिलेट अप्लाई होगा। ये जो बड़ा रेडियस है इसकी जो हमारे पास डिमेंशन होगी वो होगी हमारे पास R40, एंड हमारे पास एक और चीज़ क्रिएट होगी यहाँ पे एक्सट्रूजन होगी हमारे पास। उसका जो डायमीटर होगा एक्सट्रूड एरिया का वो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 45 मिलीमीटर गिवन है, क्योंकि ये जो कनेक्टिंग रॉड का ये वाला एरिया ये एग्जैक्ट इसके ऊपर फिक्स होगा। तो हम इसका जो आउटर डाया है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 45 मिलीमीटर डाया, एंड इंटरनल 33.8 है जो यहाँ पे भी गिवन है। सो ये हमारे पास इसकी कुछ डिमेंशन है, तो हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स पेज पे इसको क्रिएट करने। Now first we create the front plane for sketch, then create the circle. Dimension is 85 millimeter, and then we can extrude it, and the length of extrusion is 90 millimeter. Enter. OK. Now look here. Now we insert the dome at the top of the piston. Going to insert features, and here is the dome. Apply at this surface, and dome is 5 millimeter length. OK. Now look here, the dome is ready. Next one, we create the piston rings. First we select the plane for sketch, create the circle of 79 millimeter. If you look here in the diagram, the diameter of the piston ring is 79 millimeter. If you look here, 79. Okay. Now we are going to SolidWorks page, and then take the dimensions 79 millimeter. Enter here. Okay. Now we are going to create the piston ring. Okay students, so we can going to extrude cut command, select the extrude cut, and reverse direction, apply offset, and offset is 7.3. Enter. Okay, and then the length is 4.3. Enter here. Okay, and here is one thing, flip side to cut means जो आपके edges हैं उस पे वो extrude cut करेगा, not inside. Okay, now look here, आपका एक piston ring create हो गया। अब सेम ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं 3 और, लेकिन आप इनको जल्दी से अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इनको सिंपल आप लीनियर पैटर्न असाइन कर दें, लेकिन उससे पहले आपको एक एक्सेस चाहिए, तो आप एक एक्सेस क्रिएट कर लें टेम्परेरी। ओके, नाउ सिलेक्ट दिस एक्सेस,
and then apply the pattern, number of 3 pattern, and total length is 7.3 plus 4.3 is 11.6. Enter here. Okay, and select this surface. Okay, now look here. Yes, now look here, there is 3 piston ring has been created. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक्सट्रूड कट करेंगे, मींस एक सर्कल क्रिएट करेंगे 76 मिलीमीटर डाया का, एंड देन इस सिलेंडर को हम अंदर से एक्सट्रूड कट कर देंगे, मीन होलो कर देंगे इसको. फर्स्ट वी सिलेक्ट द स्केच फॉर दिस सर्कल, क्रिएट द सर्कल 76 मिलीमीटर डाया, enter here. Okay, now we apply the extrude cut command, blind, and the total length is. अब हमने कितने लेंथ तक इसको एक्सट्रूड कट करना है, अगर आप अपनी इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो एक्सट्रूड कट की कमांड है वो 85 मिलीमीटर तक यूज़ होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये अंदर सारा सिलेंडर क्रिएट होगा. ओके, अप्लाई दी लेंथ दैट इज 85, इंटर हेयर. ओके, नाउ लुक हेयर, आपका जो पिस्टन है वो अंदर से होलो हो गया. अब आप इसको रिमूव कर दें. नाउ वी आर गोइंग forward and create the circle on it. First we select plane for sketch. Okay, we create the circle at this point and then assign the dimension. This one is 33.8, enter. And the distance from this point to this line is 27, enter here. Okay, now we make this one. Okay, this is on exact the same axis, this is fully defined. Now we can make it extrude cut, use the extrude cut command, and then select here through all both. Okay, now look here. Okay students, now the one thing is remaining, that is we create a cut at this surface. First we select the plane, top plane for sketch, and create a line, create a line at this point randomly. Okay, and then create a center line at the center. Okay, now we can assign the dimension. This one is 12 millimeter exact, enter. And then we make it mirror, use mirror entities, select this one and mirror about this construction line. Okay, now we apply the dimension again, from this point to this one is 50, enter. Okay, now we use the 3-point arc, select this point, this one, and okay, now we apply the dimension, the radius is 40, enter. Okay, now we can apply the fillet at this point, select this one, also this one, and the fillet is, if you look here, the fillet radius 10. Okay, this is 10 radius. Okay, now look here, now the one thing is remaining, that is this sketch, make it closed like this one. Okay, now we are going to feature, select the extrude cut command and select this face. Okay, use through all both. Okay, now look here. Okay students,
Now the piston is approximately ready. Now the one thing is remaining. हमने select करना है right plane for sketch and make a circle at this point, and the diameter is 45. Okay, now select this and convert entities. Okay, नाउ अब हमने सिर्फ ये वाली जो सरफेस है दोनों सर्कल्स के दरमियान का जो हिस्सा है उसको हमने सिंपल एक्सट्रूड करना है। और कितना करना है लेट्स सी, देखते हैं। सेलेक्ट दी एक्सट्रूड command and selected contours, select this face only. Okay, now look here. अब हमने कितना करना है कि हमारे पास जो बोथ साइड पे जो एक्सट्रूजन होगी उसके दरमियान का जो हिस्सा है वो हमारे पास 38 का गैप है। इफ़ यू लुक हेयर, 38 गैप बिटवीन दीज बोथ एक्सट्रूजन फेसेस। ओके, तो हम इधर ऑफसेट अप्लाई करेंगे। ऑफसेट अप्लाई कर दिया हमने, कितना, हाफ ऑफ 38 इज़ 19, इंटर। ओके, एंड ब्लाइंड की जगह आप कर दें अप टू नेक्स्ट। ओके, नाउ लुक हियर। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ये एरिया भी रेडी हो गया। अब जस्ट हम इसको मिरर कर लेंगे। सेलेक्ट द मिरर एंड feature to mirror is this one. Okay, and mirror plane is mirror plane is front plane. Okay, right plane, sorry. Okay, now look here, our piston is fully ready. Okay students, so this is our piston that is created, and then we apply the color. Now we are going to detail color, appearances. Here is metal, polished steel. Okay, now look here, it is ready. Now we can save it, save as number 1 piston. Okay, save it. Now we are going to the next part, and that is piston ring. Here is their dimension: 85 millimeter and 79 millimeter dia. 4.3 millimeter is total length, mean thickness. Going to SolidWorks page, create new file, move part. Okay, select the front plane, ready for sketch, create the circles, make another circle, and then assign the dimension. This one is 79 millimeter, this one is 85 millimeter. Okay, and then apply the extrusion. Total is 4.3. 4.3, enter. Okay, now look here. Okay students, now we apply the color, and here is rubber, this one. Okay, matte rubber. Okay, now we can save it, save as to piston ring. Enter. Now we are going to the next part. Now the next part, that is crankshaft. It is very important basic part of the four cylinder engine because it can rotate the whole piston. Now if you look the dimension, there is the single part of this whole crankshaft. अगर आप इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास इसका जो रेडियस गिवन है वो हमारे पास 80 है एट द टॉप ऑफ शाफ्ट, एंड एट द बॉटम 36 रेडियस, एंड देयर इज़ द शेडेड एरिया। ये बेसिकली हमारे पास, ये आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सर्कुलर एरिया 45 इसका डायमीटर एंड टोटल लेंथ है 46, एंड एट द सेंटर on the opposite of this shaft, that is 72 millimeter dia and total length is 38, and the length from center of this circle to the center of the shaft is 44.
So let's going to the SolidWorks page and create this part. Select new part. OK. Select front plane for sketch. First we create the center lines, vertical, infinite. OK. And create again center line, horizontal, infinite. OK. Now and create a circle. Assign the dimension. 36 millimeter is the radius. Now the diameter is 72. Enter here. OK. Now from this point to this one is 45 distance. OK. Now we create a curve, 3-point curve. OK. Now we assign the dimension. First we make it horizontal, both of these points. Select this one, press Ctrl, select the next, make it horizontal. OK. Now we make a line randomly from this point to this one. Now we make this line to this circle. First select this circle and press Ctrl key and select this line. Make it OK. Now we create same line, make it mirror about this one. OK. Trim the extra line, this one and this one. Remove also it. OK. Now we make it extend little bit, just like this one, and then assign the dimension. This one is 80 radius. OK. And the angle is 33. Enter. OK. Now we can make it horizontal, both of these points. Select this one, press Ctrl key, select this one, horizontal. OK. Now our full sketch is fully defined. Now we can make it extrude. Going to feature extrude, and if you look here, the total extrusion is 15 millimeter. OK. 15 millimeter extrusion. Now look here. Now we select this one for sketch and create a circle at this point and assign the dimension, that is total diameter is 72. Enter. Make it extrude 38 millimeter length. Enter. OK. Now select the other face for sketch, create a circle at this point and assign the diameter, that is 52 millimeter. Enter. OK. Now assign the extrude command, extrusion, and 46 is the length. Enter here. OK. OK student, look here. Now we are going to make it mirror. First we select the reference plane at the exact mid between these two surfaces. Now look here. First we make it OK. Now select the mirror command. OK. And feature mirrors this one and this one. OK. Now look here. OK. Again select the reference plane between these two faces. OK. And then make it mirror. Select the mirror command and select this plane 6. OK. And here is face to mirror, bodies to mirror,
मेक इट अनमर्ज, बिकॉज हमने इसको रोटेट कराना है, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास 1 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको अनमर्ज करेंगे। अनमर्ज एंड सेलेक्ट दिस होल बॉडी। ओके, नाउ लुक हियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम है। ये देखें, हमारे पास ये बॉडी है एंड देन ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन है इसके। तो इसलिए हमने उसको अनमर्ज किया था ताकि हम इसको रोटेट करा सकें। अब हम इसको रोटेट कराते हैं। कैसे रोटेट कराएंगे? गोइंग टू इंसर्ट, हेयर इज फीचर एंड मूव कॉपी। नाउ select this body and assign the degree 180, enter here. Okay, now look here, it is completely rotate 180 degree. Now again we select the reference plane between these two faces. Okay, and mirror, select bodies to mirror this one and this one. Okay, now look here, तो हमारे पास ये पूरी क्रैंक शाफ्ट रेडी हो गई है। अब जस्ट सिंपली हमने क्या करना है, अगर आप अपनी इस ओरिजिनल डायग्राम पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक शाफ्ट क्रिएट हुई हुई है जिसकी डायमेंशन हमारे पास है जी 144 मिलीमीटर आउटर सर्कल डायमीटर है एंड 110 इंटरनल। 110 वो है जिसके ऊपर हमारे पास होल स्केचेस हुए हैं एंड देन हम उसको सर्कुलर पैटर्न साइन करेंगे। और अब हमें कैसे पता चला इस साइड व्यू से कि यार उसके ऊपर होल स्केच हुए हैं और वो भी सर्कुलर पैटर्न के? तो ये हमारे पास गिवन है डायमेंशन 10 डायमीटर 8 होल्स, मींस 8 होल्स हैं और 10 डायमीटर की हैं, और वो किस सर्कल के ऊपर होंगे? वो 110 के ऊपर होंगे, और टोटल इसकी जो एक्सट्रूजन है वो हमारे पास 15 मिलीमीटर थिकनेस है। सो लेट्स गो, हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स पेज पे। मेक दिस पेज फॉर स्केच, select the circle, make two circles and then assign the dimensions. This is 144, enter. This one is 110. Okay, now we create a hole of 10 millimeter, assign dimension 10 millimeter dia. Okay, now we assign the circular pattern, circular sketch pattern, and then select this one at center point, this one, and 8 is the quantity. Okay, now look here. Okay, now we are going to extrude command. Now select these surfaces, this one and also this one. Okay, and the total thickness, that is 15 millimeter. Okay, now look here, this end is completely ready. Now we select this one for sketch, and if you look here, there is 32 millimeter dia and 80 millimeter length. Okay, select the circle command and create a circle, assign the dimension, that is 32, enter, and the extrusion is total 80 millimeter, enter. Okay, now look here. Okay, the one thing is remaining, that is fillet at these ends. If you look here, all are 3, all fillets at the edges is radius 3 fillet. Okay, and the chamfer end at this point 2 cross 45. Okay, now select first, apply the chamfer at this edge, distance angle 2 millimeter and 45 angle. Okay, now look here,
Now next we apply the fillet at all the edges. Before the fillet we make it combine. Going to insert, features, here is combine option. Now add, select this one, also this one, and also this one. Okay, add. Okay, now the whole body is combined together, means all is in one body. Now we are going to fillet command and select the edges, and if we select this one, means select all the edges, no need to select one by one. Okay, now we apply the fillet on it, that is R3, means 3 radius, enter. Okay, now look here, the fillet is applied on all the edges. Okay students, now we apply the color. Going to appearances, and here we apply the steel, select the brush steel. Okay, now look here, now we can save it, save as 3 part, that is crankshaft, enter. Okay, now we are going to the next part. The next part, that is the connecting rod. अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 201.2, एंड इसके तो टू फेसेस हैं, एक टॉप है और एक बॉटम है। अगर हम टॉप वाले को देखें तो हमारे पास 45 मिलीमीटर डाया एंड 33.8 मिलीमीटर डाया है, और इसकी जो एक्सट्रूजन होगी वो हमारे पास 38 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन होगी। और अगर हम इसके बॉटम एंड को देखें तो हमारे पास ये दो सर्कल क्रिएट हुए हैं, एक 36 रेडियस है और दूसरा 27 रेडियस है। इसको भी हमने एक्सट्रूड करना है और वो भी सेम 38 है। एंड देयर इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग रोड। अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास टू लाइंस हैं जो कि टेंजेंट हैं इन दोनों सर्कल के साथ, एंड देन इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 6 डिग्री एंड 20 मिलीमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और हमारे पास जो इसकी एक्सट्रूजन है वो हमारे पास 18 मिलीमीटर है। एंड देन हमारे पास एक स्लॉट क्रिएट होगी एट द मिड ऑफ दिस वन, और उसकी डायमेंशन है 90 मिलीमीटर एंड रेडियस इज और 8। सो पहले हम ये बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एंड देन हम इसके ऊपर जो अप्लाई होंगे फिलेट्स वगैरह वो अप्लाई कर देंगे। क्रिएट न्यू फाइल, select part. Okay, now select front plane, ready for sketch. First we create a center line, vertical, infinite length. Okay, then create the circles. Here is two circles, that is 33.8, enter. This one is 45, enter. Okay, now we create two more circles at this point and then apply the dimension. This one is R27 and the radius is 54, and then apply the dimension. This one is radius is 27, diameter is 54, enter. And this one is radius is 36 and diameter is 72, enter. Okay, and now the length between them, that is 201.2, enter. Okay, now we create a line randomly at this point to। अच्छा, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट वी सिलेक्ट a line randomly at this point to connect this circle. Okay, and then अब हम इसको इसके साथ कोइंसिडेंट कर लेंगे। Select this one, press Control key, select this circle and release the key. Here is coincident. Okay, okay students, now then we create this mirror
Mirror entity, select this one. About mirror, this one. Okay. Okay, students. Now, the next one, that is we make it half. Select a line from this one to this one. Okay. Now, use the trim entities. Remove this one. Also this one. Okay. Now we apply some more dimensions, just like select the dimension and angle is 6. Enter. Okay. And this one is from this point to this one. The length is 20. Okay. Now the sketch is fully defined. Now we are going to extrude boss command. Select the extrude boss command and select carefully this one, this surface area. Okay. And also select this one and this one. Now mid plane use and the total length is 38. Enter here. Okay. Now look at that. Now the next one we select also sketch and going to extrude boss command. Select this one and this one. Again use mid plane and the length of extrusion is 18. Enter. Okay. Now look here. Okay students, the basic part of the connecting rod is ready. Now we are going further and create a slot on it. Select for sketch and create a center slot just like that. Okay. Now we assign the dimension. Now the dimension from this point to the center of slot is 100.75, half of 201.2. Okay. Now the length of this slot is 90. Enter. Okay. And radius is 8. Enter. Okay. Now the slot is fully defined. And now the one thing that is we can make it extrude cut. And how many extrude cut? That is 4 millimeter extrude cut on both sides. Now select the extrude cut command. Extrude cut, it is selected. Okay. And there is not a mid plane blind. And the length is 4. Enter. Okay. Now look here. Now we can make it mirror. Select the mirror command and select the plane, front plane, and then feature to mirror extrude cut. Okay. Now look here. The slot has been mirrored. Here we apply the fillet. Select the fillet command. Select the edge option. Select carefully this edge and this edge. Okay. Now apply the fillet 1 millimeter radius. Okay. Now look here. Okay students. Now we are going forward and apply fillet at this edge. Select the fillet command. Select the first option edge. Select this edge and this edge. Okay. Apply the fillet and that is 40. Enter. Okay. Now look here. Same we apply the fillet at this one. Select fillet and select edge at this end and this one and apply the fillet, that is 22.5. Enter. Okay. Now look here. Okay students, the fillet has been applied.
Now the one thing is remaining. Select the plane, top plane for sketch. Okay, here create a slot. Select the slot, straight slot. Okay, now apply the dimension, that is 76 millimeter. Enter. Okay, now make it in exact origin. This make it 0. Enter. Okay, now it is in exact center. Now the radius of this slot is 9. Okay, now we create a circle at this end and at this end of the slot. Assign the dimension, diameter is 9. Okay, diameter is 9. Enter. Now going to extrude boss command. Here we apply the offset, and that is 201.2 minus 30, and that is 171.2. Enter. And select through all and reverse direction. Okay, now look here. Okay students, now the one thing that is going to simply remove this face. Okay, select the front plane for sketch and then create a circle. Assign dimension, that is 54. Enter here. Okay, now going to feature, select the extrude cut command. Select here is through all both. Okay, now look here. And there is one more thing, that is, if you look here inside the circle, there is some restriction between the holes. So we create the hole. First we select this one for sketch and then create hole. Okay, here. Okay, select. Going to feature, extrude cut command. Now look here. Okay, now look at that. Here the one thing is remaining, that is applying fillet at this edge. Select the fillet command, select this edge and this edge. Applying the fillet 3 radius. Okay, now look here. Okay, now we are going to apply the color gold. Now look here. ओके, हमने इसको गोल्ड कलर इसलिए अप्लाई किया, बेसिकली हम इसको बाकियों से डिफरेंट दिखाना चाहते थे, तो इसलिए गोल्ड कलर इसमें अप्लाई कर दिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट वी कैन सेव इट, सेव एज for connecting rod. Enter. Now we are going to the next part. The next part, that is connecting rod cap. अगर हम इसके व्यूज़ देखें तो हमारे पास एक टॉप व्यू गिवन है और एक साइड व्यू गिवन है. तो हम इसको किसी भी एक व्यू को यूज़ करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम इसके साइड व्यू को देखें तो हमारे पास डायमेंशन गिवन है. टोटल हाइट 60 मिलीमीटर एंड फ्रॉम सेंटर टू दी साइड एज इज़ 47 मिलीमीटर लेंथ. और जो सर्कल है हमारे पास, एक 36 है और दूसरा 27 रेडियस है. हमारे पास जो इसका टॉप व्यू है उसमें अगर हम इसकी जो दो सर्कल हैं वो 9 मिलीमीटर डाया है एंड जो स्लॉट टाइप गिवन है वो हमारे पास 9 रेडियस है. यानी आपको जो टोटल एक्सट्रूजन होगी इस
इस पार्ट की वो हमारे पास 9 + 9 18 होगी। क्रिएट फ्रंट प्लेन फॉर स्केच and make a center line, vertical, infinite. Okay, select. Now here we create a circle, two circles, then assign the dimension. This one is 54 millimeter dia, this one is 72 millimeter dia. Okay, here we create a line from this point to this one randomly, this one just like this one, and this one. Okay, now we assign the dimension. From this point to this one is 60, enter. Okay, now from this point to this one is 47, enter. Same, this one to this one is 47. Okay, and from this one to this point is 22, enter. And from this point to this point is 27, enter here. Same, from this point to this one is 22. Okay, and from this point to this point is 27, enter. Okay, now the sketch is fully defined. Then we apply the extrusion, going to feature extrude boss command. Before extrusion, the one thing is remaining, that is we make cut just like this one. Select and remove this half of the sketch. Okay, now we are going to feature, going to extrude boss command and select this one, mid plane, and the total extrusion, that is 38, enter here. Okay, okay students, now we are going forward. Select this sketch, again extrude boss, select this one and this one, mid plane again, and the length is 18, enter. Okay, now look here. Okay students, now we are going forward and create the holes at this point. Now select for sketch, select the circle just like this one. Okay, and now assign the dimension. This one is 9 millimeter dia, this one is 9, enter. Okay, and the distance between these circles are 76, enter. And make it in exact center, means from this point to this one is half of 76, and that is T8, enter here. Okay, now it is in exact center. Now we can use the extrude cut command. Select the blind and through all. Okay, now look here. Okay students, now the one thing is remaining, that is first we make it sketch. Okay, create the circle again, and here is also again, and assign the dimension, that is 18 millimeter dia. This one is also 18 millimeter dia.
Okay, now we can use extrude cut command and selected contours. Select this face. First we remove it. Okay, now we make it close and then we can extrude cut. First select the sketch and create a line at this point to this one and this one. Okay, again a circle and then assign the dimension, that is 18 millimeter dia. Enter here. Okay, going to sketch, feature, extrude cut command, select this face and this face. Okay, now look here. तो स्टूडेंट्स ये हमने फिर दूसरा मेथड अप्लाई किया इसको एक्सट्रूड कट करने का, वो उसमें कोई एरर वगैरह दे रहा था। खैर कोई नहीं, हर चीज़ के दो दो मेथड होने चाहिए आपके जहन में, अगर एक नाकाम हो जाए तो दूसरे से आप ट्राई करें। सो दिस वन इज़ कनेक्टिंग रॉड कैप। नाउ द वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज फिलेट at this edge. Apply fillet, select this edge carefully and also this one. Apply fillet 3 millimeter, enter here. Okay, now look here. Okay students, the connecting rod cap fully ready. Now simply we are going to assign the color. Appearances gold, similar as we assign the connecting rod. Okay, now look here. We are going to save it. Save as 5 rod cap, enter here. Okay, now we are going to the next part and that is piston pin. Here is 82 millimeter length, 33.8 millimeter dia and at the edges 2 cross 45 chamfer. Okay, select new file. Okay, select front plane for sketch, create a circle, assign the dimension 33.8, enter here. Feature extrude boss 82, enter here. Okay, select the chamfer, select both edges and apply the chamfer, that is 2 and 44, 45 millimeter, sorry 45 is the angle. Okay, now look here. Okay students, all part has been ready. Now we assign the color chrome. Now look here. Okay, we can save it. Save as 6 pin, enter here. All the parts has been created. अब हम चलते हैं असेंबली में और वन बाय वन हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं. असेंबली. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम वन बाय वन पार्ट को इंसर्ट करते हैं. फर्स्ट वन पिस्टन, सेकंड वन पिस्टन रिंग, थर्ड वन क्रैंक शाफ्ट, फोर वन कनेक्टिंग रॉड, फिफ्थ वन रॉड कैप एंड सिक्स वन पिन. तो सबसे पहले हम क्रैंक शाफ्ट को प्लेस करेंगे क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड ने प्लेस होना है. तो पहले जो होगी वो क्रैंक शाफ्ट की प्लेसमेंट होगी. ओपन. नाउ लुक हियर. अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो मेन चीज़ है ना कि हमने इस क्रैंक शाफ्ट को एडजस्ट कैसे करना है, तो वो आपने देखना है. सबसे पहले हम इस पे राइट क्लिक करेंगे,
इसको फ्लोट करेंगे, मीन ये मूवेबल हो। सेकंड वन, अब हमारा जो पिस्टन है उसने इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर प्लेस होना है एंड देन क्रैंक शाफ्ट ने मूव करना है। अब इसने मूव किस तरह करना है, ज़ाहिर सी बात है इसको कोई पाथ गिवन हो, कोई इसका फ्रेम हो जिसके ऊपर इसने रोटेट करना है। तो फर्स्ट हम एक फ्रेम इसका क्रिएट करेंगे जिसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे एंड देन ये मूवेबल होगा। तो अभी आप देखें हम एक इसका फ्रेम स्केच करते हैं। फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन फॉर स्केच। Okay, now we create a frame of crankshaft. Okay, create a line. जितने पिस्टन कनेक्टिंग रॉड है उतने ही हमारे पास ये लाइन भी क्रिएट होंगी। आप यूँ समझ लें कि ये एक किस्म की पिस्टन कनेक्टिंग रॉड ही है, बस हमने इसको कनेक्टिंग रॉड के साथ कोसेंट्रिक करना है। नाउ वी असाइन द डायमेंशन। दिस वन इज 156. Okay, this one to this one is 114. Okay, ये आप देख सकते हैं इनकी डायमेंशंस उधर ओरिजिनल जो डायग्राम है उस पर मौजूद है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारे पास 91 है, इंटर। ओके, नाउ हमारे पास ये फ्रेम क्रिएट हो गया। अब जस्ट हमने अपने इस क्रैंक शाफ्ट को इसके ऊपर कोसेंट्रिक करना है। यूज़ मेट कमांड, select the concentric command and make concentric this line with this one. Okay, now look here, ये इसके concentric हो गया। अब एक और कमांड यूज़ करते हैं, coincident, make this point coincident with this face. Okay, now look here। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फ्रेम को, इस पाथ को बनाने का फ़ायदा क्या था। अभी आप देखें, ये फ्रीली रोटेट कर रहा है इस फ्रेम के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मकसद था इसको बनाने के लिए। नाउ अब मैं इंसर्ट करता हूँ नेक्स्ट कंपोनेंट्स वन बाय वन। ये सारे इकट्ठे ही कर लेता हूँ एंड देन उसको असेंबल कर देंगे। 6 पार्ट, लेकिन एक क्रैंक शाफ्ट को छोड़ के। प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट क्रैंक शाफ्ट। ओके, without crankshaft, all parts selected. Press tab, enter here, again press tab, enter here. Enter here means just click. Okay, okay, and this one pin. Okay, now अब हम इनको असेंबल करते हैं। फर्स्ट वन, open mate and select concentric command, make ring concentric with piston. Okay, and then make coincident this face with this face. Okay, if you look here. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप बार बार पिस्टन रिंग्स को इंसर्ट करके और यही प्रोसीजर करके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है। आप जाएं इंसर्ट कंपोनेंट को स्क्रॉल डाउन करें, हेयर कॉपी विद मेट्स। अब आप उसको सेलेक्ट कर लें जिसको आपने कॉपी करना है विद मेट के साथ एंड हेयर क्लिक। नाउ अब आपने कोसेंट्रिक करना है उसको किसके साथ कोसेंट्रिक होना चाहिए, इसके साथ। और किसके साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए, ये आपके पास रिपीट हो रही है इसके साथ। ओके, लुक हियर। अब दोबारा वही प्रोसीजर करना है, पहले इसको ओके करके दोबारा वही किसके साथ कोसेंट्रिक करना है, इसके साथ। और कोइंसिडेंट किसके साथ करना है आपको, इस फेस के साथ। ओके, इसको आप क्रॉस कर दें। नाउ लुक हियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। सेलेक्ट मेट कमांड and select the concentric. Select this one with this one. Okay, now going forward,
and going to advanced, select the width command, select the pin both faces, also this face, and make center of this piston. Okay, now pin exact center में आ गया. Now again use concentric command, select this one with this one, sorry, again select concentric, make this one with this one. Okay, now going to advanced, select width command. अब इसको भी आप पिस्टन के एग्जैक्ट सेंटर में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके दोनों फेसेस पहले सेलेक्ट करें, ये वाला भी फेस, और इस पिस्टन के एग्जैक्ट सेंटर में से कर दें. ओके, नाउ लुक हियर, वी यूज अगेन concentric command and select this circle concentric with this one. Okay, again use concentric, make this circle concentric with this circle. Okay, it move down and use coincident command, select this face coincident with this face. Okay, now look here, आपके पास फुल पिस्टन विद कनेक्टिंग रॉड रेडी हो गया. अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं फर्स्ट, रोटेट ऐसे, एंड देन थोड़ा सा मूव कर लेते हैं. ओके, इसके पास पास ले आए हम. ओके हो गया. इस पिस्टन को आपने इस लाइन के एक्सेस के कंसेंट्रिक करना है. हमने ये लाइन क्रिएट इसीलिए की थी कि हमारा ये जो पिस्टन है वो इस लाइन के एक्सेस में अप एंड डाउन मूव करे, इससे इसके एक्सेस से बाहर ना निकले. तो हमने क्या करना है, यूज कंसेंट्रिक कमांड एंड मेक दिस पिस्टन कंसेंट्रिक विद दिस लाइन. ओके, अब हमारा ये जो पिस्टन है इस लाइन के एक्सेस में ही अप एंड डाउन मूव करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड जो हम यूज करने जा रहे हैं वो विड्थ की कमांड, सेलेक्ट विड्थ कमांड, सेलेक्ट दिस फेस और कनेक्टिंग रॉड के दोनों फेस. ओके, अब हमारे पास जो कनेक्टिंग रॉड है वो एग्जैक्ट अपनी प्लेस पे आ गया. ओके, अब एक कमांड रहती है कि जो हमने इस फेस को एग्जैक्ट कोसेंट्रिक करना है इस फेस के. ओके, यूज द कोसेंट्रिक कमांड, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन. ओके, नाउ लुक हियर, अब आपका कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन एग्जैक्ट अपनी प्लेस पे आया है. अगर आप देखें इसको रोटेट करके, लुक हियर, ये किस तरह पिस्टन एक ही एक्सिस में अप एंड डाउन मूव कर रहा है और किस तरह क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड को घुमा रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका एडजस्ट हो गया एक पिस्टन कनेक्टिंग रॉड. नाउ अब इसी तरह के आपने तीन और कनेक्ट करने हैं इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर. वही सेम प्रोसीजर जैसे आपने रिंग को कॉपी विद मेल्ट किया था, आप इसी तरह इस पूरे कनेक्टिंग रॉड को और इस पिस्टन को आप कॉपी विद मेल्ट कर सकते हैं. सो गोइंग टू कॉपी विद मेल्ट्स, select all the components, select this one and also this one. Okay, now अब हमारे पास यहाँ पे तीन मेट्स आ रही हैं. सबसे पहले वेट है कि आपने किस के सेंटर में इसको प्लेस करना है. select these two faces. ओके, एंड देन कॉन्सेंट्रिक आपने किसके साथ करना है, इसके साथ, एंड देन अगेन कॉन्सेंट्रिक आपने इसके साथ करना है. ओके, नाउ अगेन हमने किस जगह पे प्लेस करना है, select width this face and this one, again concentric with this one and concentric with this one. Okay, now select this one. Okay, now again use width command, then again concentric and then again concentric with this one. Okay,
सो हम अब क्या करते हैं कि इस स्केच को हाइड कर देते हैं. ओके, नाउ लुक हियर. ओके स्टूडेंट्स, look here. Now we can save it. Rebuild and save. Save as 4 cylinder engine. Enter. Okay. Now it is saved. After save the assembly, we are going to motion study of the 4 cylinder engine. अगर हम इसकी स्टडी को देखें तो हम जाएंगे मोशन स्टडी में, एंड देन वी आर गोइंग टू basic motion, and here we adjust first frame per second, and we want to make it 50. Enter here, or 60. 60 is better. Okay, now we adjust the motor, and that is 60 rpm, and first we select the part in which motor is adjusted. Select this one. Okay, and then here we first calculate it. It take little bit time to unzip, and then it is able to freely move. Now, now look here. Okay students, so this is the steady motion of the 4 cylinder engine. If we want to playback mode, now look here. So now students, this is the 4 cylinder engine assembly, and steady motion is now completed. You have seen how each component from piston to the crankshaft work together. I hope this video is helpful for you. Don't forget to like, share and subscribe for more detailed tutorials and animations. Thanks for watching. Stay safe, stay with us. Allah Hafiz.